A very good evening, all of you. Welcome back to the new session of the digital circuits, that is the formula revision of the digital. So जैसा कल क्लास में हमने नेटवर्क एनालिसिस का रिवीजन किया अच्छी तरह से, सो सिमिलर वे पे आज हम इस सेशन के अंदर वी विल बी सॉल्विंग द डिजिटल क्वेश्चंस, सॉरी डिजिटल का रिवीजन करेगा. सो पूरा डिजिटल का रिवीजन हो पाएगा अब. बट इसमें ऐसा है, सपोज देर इज ए नंबर सिस्टम्स, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ये सभी चीज तो स्किप कर सकते हैं ना. सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, इट्स नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. सो एक तो छोटी छोटी चीज जो होता है ना, उसको हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, इसको रिवाइज भी नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली याद हो पाएगा. ऐसा वाला चीज को छोड़ के बाकी चीज तो हम डिस्कस करेगा. एंड विच एवर द फॉर्मूलाज आर हैविंग मोर इम्पोर्टेंस, डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग. सो डिजिटल में ज्यादा फॉर्मूलाज वाला बात तो नहीं है. एवरीथिंग इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट. स्टिल जो चाहिए वो डिस्कस करेगा. ओके, वेयर इज माय मार्कर? काइंडली कंफर्म, या काइंडली कंफर्म माय ऑडियो एंड वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर. सो इसके अलावा आप इस सेशन पे, क्योंकि ये रिवीजन वाला सेशन है ना, इसमें मैं ज्यादा आपसे इंटरेक्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करना. सो इसलिए एकदम फ्लो पे सेशन खत्म करेगा. सेशन खत्म होने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो मैं हमेशा आई कैन हेल्प यू बेटर, नो डाउट इन इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो शुरू करेगा अभी. आवाज आ रहा है ना? ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं भी. सो देखो, दिस इज योर सिलेबस फॉर डिजिटल सर्क्यूट्स. इसमें अगर आप स्पेसिफिकली चाहिए तो, एक मिनट में मार्कर का कलर चेंज करता हूँ. या these three chapters are of importance. This is your official syllabus for electrical, and पूरा सारे chapters are required for the EC students. Okay, so that is about your syllabus. अगर CSC बच्चों को ही है तो ये चार सब्जेक्ट प्रिपेयर करना, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब को भी पूरा सिलेबस तो प्रिपेयर करना चाहिए. So most of the for EC students, every single chapter is important here. सो हमारे पास कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर्स. लॉजिक फैमिलीज के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरीज वाला टॉपिक भी होता है. सो नंबर सिस्टम्स, बुलियन, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल, डेटा कन्वर्टर्स, लॉजिक फैमिली. सो इस चैप्टर्स में जो टॉपिक्स और जो फॉर्मूलास आप याद करना, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज अभी रिवाइज करेगा, शुरू करेगा नंबर सिस्टम्स का हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम्स में फर्स्ट थिंग यू विल गेट इज बेस आर रिप्रेजेंटेशन. अगर आपके कोई भी नंबर बेस आर पे रिप्रेजेंट हुआ तो ईच डिजिट का रेंज कितना होता है? 0 to r-1. ठीक है, सो वो उतना बहुत बेसिक वाला चीज के बारे में डिस्कस तो नहीं कर रहा हूं मैंने. देन सो फर्स्ट थिंग यू विल गेट इन योर माइंड इन द नंबर सिस्टम्स इज कन्वर्शन. जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ. So you can skip this conversions wala part. I hope you know this conversions, how to convert a binary to hexa, binary to octal, all those basic stuff. I hope you know it. So इसमें मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, शुरू करेगा अभी. देखो, बीसीडी कोड्स. सो लाइक एस्टरडे क्लास में भी हमने डिस्कस किया ना, बीसीडी कोड क्या होता है, बाइनरी क्या होता है. सो फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन विच विल मेक माय कन्वर्शंस easy for the display units, we can represent each digit separately coded as a binary. So in the BCD codes we can have a basic BCD code 8421, and you have 2421, 84 -2 -1, XS3, like this. There are many number of codes. इसमें ये सभी कोड्स को बोलते सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स. सर व्हाट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड सर? In self-complementary, one's complement is equal to nine's complement. Sir, how to find nine's complement of a number? Subtract each digit from the 9. One's complement, subtract each digit from the 1. So in BCD arithmetic, आप याद करने के लिए few points are there. When you add two BCD numbers, हम बाइनरी एडर यूज करके दो बीसीडी नंबर्स ऐड किया तो द रिजल्ट हमेशा जो मिलेगा ना, वो बाइनरी फॉर्मेट में और सम इनवैलिड फॉर्मेट में आपको मिलेगा. सो उसको एक प्रॉपर बीसीडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करना, when you add two BCD numbers to convert your result into a valid BCD, हम each निबल का मतलब each 4 बिट्स को चेक करके, अगर वो 4 बिट का रिजल्ट ग्रेटर देन 9 और कैरी हुआ तो हम 6 ऐड करेगा, नहीं है तो we will take it as it is.
सो बिकॉज सपोज यू टेक VCD में क्या होता है ना, हर डिजिट का रेंज 0 से 9 तक की होता है। आप 9 और 6 ऐड किया तो 15 होता है ना आंसर। सो इसको आप 1 और 5 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द रूल। सिमिलरली इफ यू हैव टू नंबर्स इन एक्सेस 3 फॉर्मेट, एक्सेस 3 में 2 डिजिट्स को ऐड किया तो कैरी जनरेट हो गया तो वी शुड ऐड 3, नहीं है तो subtract 3। Here we should add 6 based on the results. So those conditions I have specified here. Okay, चलो। Okay, so for understanding purpose, let me take one example and take it. For example, you have 74, 74 क्यों लेना, complex क्यों करना, 25 and 1 8. What is the result? 8 plus 1, 8 plus 5, 8 plus 5 13 and 4. So 2 in the excess 3 is 5, 5 in the excess 3 is 8. 1 in the excess 3 means add 3 for each digit. 100 and 8 means 1011. So 110 sum is 0, carry 1. So 1 plus 1 sum 0, carry 1. 1, 1 plus 1 sum 0, carry 1. Here अगर कैरी जनरेट हो गया तो आपने क्या करना, 3 ऐड करना। कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करना, subtract 3। देन व्हाट डू यू गेट, इफ यू 3 से 3 ऐड किया तो 6 हो पाएगा। 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, आपको 7 आ पाएगा। So here in excess 3, 7 minus 4, 7 minus 3, what is its equivalent? 4. 6 minus 3, what is its equivalent? 3. So that is how you can get the valid result in the excess 3 format. That is what we call excess 3 arithmetic. Similar to binary, we can also have a gray code number. In a gray code number क्या होता है ना, suppose you have a V3, V2, V1, V0. इसको ग्रे कोड क्या होता है सर? V3 is converted into G3. Now इसको XOR करके, XOR ऑपरेशन करके आपको G2 आएगा। डोंट आस्क मी व्हाट इज XOR, ठीक है। सो ये दोनों XOR किया तो आपको G1 आएगा। ये दोनों XOR किया तो आपको G0 आएगा। दिस इज ए कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे कोड। ग्रे कोड is a unit distance code between any two adjacent numbers, only one bit will be different. Similarly, understand what I'm saying? V3 V2 XOR किया तो आपको ये आएगा। Otherwise I will show that. MSB as it is copy करो। Here V3 V2 XOR operation. Okay. Similarly, if gray code is given, how to convert into binary? G3 को as it is ले लो और ये G3 V3 आएगा ना, ये रिजल्ट और G2 को XOR करो, आपको V2 आएगा। ये रिजल्ट और G1 को XOR करो, आपका B1 आएगा। ये रिजल्ट और G0 को XOR करो, आपको B0 आएगा। That is how you can convert a binary number into a gray code or a gray code into binary. So these are the basic BCD codes we have. So now let's move further.
So this is a slightly important topic in your number systems, that is the data representation. So there are various way to represent your data. So this issue will come when you need to represent positive numbers and negative numbers. अगर केवल normal positive numbers ही है तो ये सारे representations तो नहीं चाहिए, regular unsigned magnitude representation से चलेगा. If you want to represent the number in positive numbers and negative numbers also, we'll go for these three different ways of representation. Sign representation में क्या होता है? First वाला bit is dedicated for the sign. Sign bit 0 है तो positive number, sign bit 1 है तो negative number होता है भाई. So first bit is dedicated for sign, बाकी is dedicated for magnitude. Similarly, for there are two complementary representation. Positive numbers are represented as it is. In complementary representation, negative numbers are represented by their ones or twos complement representation. So you can see in the data representation using different number systems, these are the what we call ranges. Suppose if you have n bits, what is the range of the numbers you can represent? For example, मेरा पास 4 bits है तो 0 to 15 तक में रिप्रेजेंट कर सकते नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में. Here same 4 bit में you can represent from -7 to +7. Here same 4 bit में you can represent from -7 to +7. Here same 4 bits है तो in 2's complement representation -8 to +7. Its range is slightly different. So sometimes questions तो आ रहा है इस range के बारे में, इसलिए मैं table दिया ये वाला. Okay. कोई printing mistake तो नहीं है ना? हाँ, चलो. So one more important characteristics of the number systems is overflow condition. Overflow क्या होता है सर? मेरा पास 4 ही बिट है, मेरा रिजल्ट 5 बिट हो गया तो इसको बोलते हैं overflow condition. So signed arithmetic, normal केस में carry बोलते हैं, signed arithmetic में we call it as a overflow. क्योंकि in the signed arithmetic, if your MSB is 1, carry is also 1, you can neglect the carry. But if your MSB is 0, carry is 1, उस केस में आप कंसिडर करना पड़ेगा. So it depends on signed case में, it is not every time we consider the carry. Sometimes we can consider, sometimes we can neglect it. When to consider, when we cannot consider it is given by the condition of overflow. So overflow ये बोल रहा है हमको. So overflow is giving you the condition such that when to what we call what is the when the result is beyond the range of your representation. जैसा मैंने रेंज दिया, पिछले वाला रेंज दिया ना, सो क्या रेंज है यहीं पे आप देख सकते हैं 4 बिट पे मैक्सिमम रेंज इज +7, बट मैंने 5 और 4 ऐड किया, मेरा रिजल्ट तो 9 हो पाएगा. देन मेरा रिजल्ट इज मोर देन द रेंज. मैंने 4 बिट से रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस केस में मैंने कैरी को कंसिडर करके रिप्रेजेंट करना. दैट इज व्हाट वी कॉल ओवरफ्लो कंडीशन. सो ओवरफ्लो कब होता है सर? एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर ऐड किया तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा. If you add two positive numbers or two negative numbers, if the result is beyond the range, or if you add two positive or two negative, if the result is two positive का result हमेशा positive ही आना चाहिए, negative आएंगे तो overflow. two negative numbers add किया, result negative ही आना, positive आएंगे तो overflow. So you can see when we add two positive numbers or two negative numbers, if the result is greater than the range of representation, then it is called as a overflow condition. Overflow हुआ तो we need to increase the range by increasing the number of bits. So two positive numbers add kiya. For example, here positive numbers means sign bit is 0. Okay. Next sign bit is 0, but the result is negative. Or positive number negative two negative numbers add here, result is positive. Okay, sign of the result is 1, but original number sign is 0. 0 means positive, 1 means negative. It is a overflow. Similarly, when your result MSB and carry are different, or carry input to the MSB is not equal to carry output of the MSB, then is also called as overflow. So C out XOR with C in can give me the condition for overflow. So these are important expressions they have given in earlier exams also, इसलिए मैंने इसको include किया. So the next point is the fixed and floating point representation. अभी तक वो exam में नहीं दिया, but they have included in the syllabus. So इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा discuss करना पड़ेगा.
ओके, सो ये वाला सिलेबस पे इंक्लूड किया फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो इसके बारे में लेट्स हैव ए डिस्कशन। So in this, they can ask you. So listen here. In the fixed and floating point representation, this is not this is छोटे से टॉपिक 5 मिनट का, इसमें इसी वाला बच्चों के लिए नहीं चाहिए, ये केवल इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए नहीं चाहिए, केवल इसी बच्चों के लिए चाहिए ये वाला पार्ट। सो IEEE 754 representation is the standard representation for fixed and floating point. So fixed and floating point representations क्या करेगा सर, अगर मेरा नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैंने साइन मैग्नीट्यूड ले लिया, ones complement, two's complement representations ले लिया ना। Similarly, if I have, एक मिनट, so if my number is having fractional part 2.34, so fraction कंप्यूटर को पता नहीं डॉट को कैसा रिप्रेजेंट करना, whether it is positive negative डॉट, सभी चीज कंप्यूटर को समझ होने के लिए हम वंस एंड जीरो से ही रिप्रेजेंट करना। सो इसलिए क्या करेगा ना, एक मेथड ये होता है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें सपोज हमारा पास इतना नंबर ऑफ बिट्स है तो x नंबर ऑफ बिट्स आर फिक्स्ड फॉर इंटीजर पार्ट, y नंबर ऑफ बिट्स आर फिक्स्ड फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरा चीज ये होता है floating point representation, where we can increase the range by compromising on the precision. Detailed तो मैं regular class में explain किया already, whether in the YouTube or in the comprehensive courses, why we every single detail about this. But now, in a shortcut way, what is IEEE 754 representation? एक मिनट, IEEE 754 representation, इसमें you have 32 bits. So one bit is used for representing sign। मैं ऐसा एक्सप्लेन किया तो आपको समझ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो एंड 23 बिट्स, 1 मिनट, 8 बिट्स फॉर Mantissa एंड Mantissa को बोलते सिग्निफिकेंट ऑल्सो, एंड 23 बिट्स आर यूज्ड, अरे क्या मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट, 8 bits are used for exponent and 23 bits for Mantissa. This is the format. So we can say this is a floating point representation. Your number will be containing three parts: S, E, M, sign, exponent, or Mantissa. For example, let's take one number. एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक नंबर ले लो, मेरे पास एक, सो से सम 52.21, सो इसका रेडीमेड कन्वर्शन इज अवेलेबल, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ 51.28175। ओके, 21875। सपोज दिस इज माय डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बिकॉज बाइनरी इक्विवेलेंट तो आप लोग कर सकते हैं, 110 100 डॉट 00 111। Okay, now how to represent this number in the computer, that is our biggest challenge now. So अभी ये वाला नंबर को कंप्यूटर में कैसा रिप्रेजेंट करना, ये काम है हमारा इम्पोर्टेंस, राइट? So let us see how to make this possible. So computer में this will be the, this is the format. Here Mantissa is a normalized Mantissa, इसका मतलब भी explain करेगा। Firstly we should shift this dot to 1.m format. So for any floating point representation में इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, 1.10 100
0011 इंटू कितना डॉट्स शिफ्ट किया मैंने 5 डॉट्स सो 2 पावर 5. So if you multiply with 2 power 5, you will get the same number. Both are same ना. So examiner क्या करेगा ना, ये 1 dot फर्स्ट बिट हमेशा हर नंबर को 1 ही होता है. So लेफ्ट साइड 0 सभी नेग्लेक्ट कर सकते ना. So here क्या करेगा ना, ये 1 तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा. बाकी पार्ट जो होता है ना, दिस विल बिकम योर मांटिसा. एक्सपोनेंट में they will use the format of excess 127. सो एक्सेस 127 पे क्या करेगा, ये वाला 5 वाला नंबर को 127 ऐड करके दे विल बी रिप्रेजेंटिंग 132. व्हाट इज 132 इन द बाइनरी? 128 64 32 16 8 4 2 1. This is the exponent. Okay. Now what is your sign bit? 0. Okay. Exponent 100000100. So कंप्यूटर का हार्डवेयर ऐसा डिजाइन करेगा, whenever this comes it will decode to this format. Then what is your exponent? 101000011, बाकी सारे zeros. You can add any number of zeros here, it doesn't change your value. So this is the sign bit, exponent and mantissa. Sometimes exam पे ऐसा भी possible है, he may give you this and he will ask you this. उस केस में how to get its value represented in this format is given by s power -1. अगर s 0 है तो or you can also write like this, -1 whole to the power of s. s 0 है तो वो 0 हो पाएगा, नहीं है तो I mean s 0 है तो +1 आएगा, नहीं है तो -1 आएगा. Then this is the sign. Okay, it is indicating sign number. Then 1 dot m into 2 to the power of exponent should be 127 minus e. 127 minus e. This is the value of, this is the decimal value of. अगर आपको डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस नंबर चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया वाला नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू निकालना चाहिए तो आप ऐसा यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट. एक्सपोनेंट इज हमेशा एक्सेस 127 पे रिप्रेजेंट करेगा टू रिप्रेजेंट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. चलो आगे चलेगा. सो आपको कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड पे लेता हूँ. सो दैट फिनिशेस योर फर्स्ट चैप्टर. So this is the topic most of the people don't discuss in any classes because abhi tak questions to nahi aaya and relatively it is a CSC topic. So many people may not be comfortable, but I'm not saying that you can skip this topic because anytime anything is possible. Examiner का mind ऐसा हो सकता है कभी भी ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आने के लिए बहुत chances है क्योंकि ये टॉपिक का relevance is there. It is relatively an important topic. एग्जाम का इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं आएंगे तो भी पॉसिबिलिटीज तो है भाई. चलो आगे चलेगा. So the next chapter is the logic gates, Boolean algebra, K-maps, all these things. So first we understand how to represent a number so that computer is able to understand your data. एंड इसके बाद वो डाटा को मिनिमाइज कैसा करना, वो हार्डवेयर यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना और कोई भी प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसा कन्वर्ट करना, सभी चीज इसी वाला चैप्टर में आपको मिलेगा. दैट इज द बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स एंड द के मैप्स. सो इसमें बेसिक गेट्स आई होप यू नो इट, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एंड नॉर, एक्स और एक्स नॉर, उतना तो आपको पता होना चाहिए. वो वाला डिस्कशन तो अभी नहीं करेगा भाई. बट एक इंपॉर्टेंट ये होता है पैरिटी जनरेटर एंड डिटेक्टर, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो एक्सऑर गेट, एक्सऑर में क्या होता है ना, इफ इनपुट कंटेन्स odd number of ones, output equal to 1. So what is the what are the advantages or applications of the XOR is it can be used for parity generation and phase detection, phase shift measurement, maybe it will be helpful. So one of the important application for this is it is called as
even parity generator, even parity generator and odd parity detector. Even parity generator and odd parity detector. What is even parity generation, sir? When parity क्या करेगा? It will set, parity bit will set the number of bits to be even or odd. So number of bits odd है तो this XOR gate will generate one and it will make the total number of ones is equal to even. That is called as even parity generator, and it is will also detect when the input contains odd number of ones or not. So complement of XOR, मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सऑर क्यों बोल रहा हूँ, एक्सनॉर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज एक्सनॉर का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है भाई. सो नॉर्मली एक्सऑर एंड एक्सनॉर कैन बी कॉम्प्लीमेंट, बट अगर एक्सऑर दो एक्सनॉर्स लेके एक एक्सनॉर आपने इम्प्लीमेंट किया तो ऑड नंबर ऑफ केस में एक्सऑर एक्सनॉर कैन बी सेम ऑल्सो. फॉर इवन हमेशा इट इज कॉम्प्लीमेंट, फॉर ऑड नंबर इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन. सो इसलिए ऑड नंबर ऑफ इनपुट, सो इसलिए मैं इसको कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर बोल रहा हूँ. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सऑर is reverse, that is odd parity generator and even parity detector. Odd parity generator or even parity detector. That finishes this basic about your XOR and XNOR gate. So the basic Boolean laws here I want to discuss a little basic. Okay. So like commutative, few things. Okay. So commutative में क्या होता है सर जी? What is commutative property? A plus B equal to B plus A. Who will satisfy this AND gate? It is applicable. कहाँ पे applicable भैया? AND gate पे applicable, OR gate के applicable, NAND, NOR. I hope you know this basic NAND, NOR are called as universal gates and all those stuff मैं discuss नहीं कर रहा हूँ. Okay. XOR, XNOR. Then not applicable. कहाँ पे not applicable? It is not applicable for implication and inhibition. These are also universal logics. Implication means A implies B equal to A, but not B. Sorry. When A is true, B is the output. So A is true, B is the output. A inhibition B is A into B bar. इसको बोलते हैं exclusivity. Okay. So ये दोनों cases commutative property को satisfy नहीं करेगा. The next one is associative. So associative क्या होता है ना? A plus B plus C. आप ऑर्डर उल्टा करेंगे तो पहले ये ऐड करो देन B plus C ऐड करो, सेम आंसर आएगा. सिमिलरली इफ यू हैव ये भी, इसको C से डॉट करो और ये डॉट BC करो, आपका आंसर सेम आएगा. सो इस केस में क्या होता है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर AND gate, OR gate, XOR. It is not applicable for NAND nor complement of XOR. And few more rules ये होता है, A plus A plus A plus A equal to A. A dot A equal to A. A plus 1 is 1 in the Boolean. A plus 0 equal to 0. A into 1 is A. A into 0, 0. A plus A bar 1. A into A bar 0. ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए, वो तो बहुत ही बेसिक है. आई होप यू पीपल नोस दैट. सो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना,
A into B plus C equal to AB plus AC, or A plus BC equal to Boolean पे. केवल ये सभी rules are for Boolean only. Please understand, not for regular algebra. So here very important rule, A plus A bar B is always equal to A plus B. Absorption rule बोलते हैं. ये बहुत important, बहुत फायदा करेगा आपका एग्जाम का सॉल्यूशन का समय पे. ठीक है, कल क्लास में मैं 2 level लॉजिक एक्सेट्रा डिस्कस किया ना, वो भी आप रिवाइज करना. ओके, so this is the condition which is very important. And there is one more rule called transposition. So transposition आपको क्या बोल रहा है? A plus B into A bar plus C. Then multiply AC और A bar. Okay, transposition is done. Then duality. So duality is nothing but replacing and with or with and, 1 with 0, 0 with 1. Okay, positive logic will become negative logic. Okay, that is what given by the duality principle. And if you take 2 times dual, you get back the original. If one time dual is giving you same, then इसको बोलते self dual function. So with n variables, आपको 2 power 2 power n minus 1 self dual functions possible. मैं एग्जाम्पल दे दूंगा. सो इसमें एग्जाम्पल क्या? AB plus BC plus AC. व्हाट इज द डुअल ऑफ दिस? इसका डुअल क्या होता है? A plus B इंटू B plus C इंटू A plus C. इसको मिनिमाइज करके चेक करो. इट विल गिव यू अगेन AB plus BC plus AC. These are called as self duals. सो सेल्फ डुअल में एक बार डुअल ले लिया तो आपको वापस सेम आएगा. सो द लास्ट कंडीशन इज शैनॉन्स लॉ. सो शैनॉन्स लॉ आपको क्या बोल रहा है? ओके, कॉम्प्लीमेंट कैन बी डन बाय फाइंड डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट इन फुल. फॉर एग्जाम्पल, F इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. एक सिंपल सी ले रहा हूं मैंने. व्हाट इज F बार? फाइंड डुअल, then complement each. That is given by the duality. These are the basic Boolean rules. So the next one is SOP POS. Some of the products is used to represent. Say हमारा पास एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन को इक्वेशन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है. एक तरीका तो यूजिंग वन व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू वन. सो मैं इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू वन, इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ बाकी केस में. फॉर एग्जांपल, मेरा इनपुट 1 2 4 7 पे माय आउटपुट इज 1. सपोज मेरा इनपुट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 7. फॉर 1 2 4 7 माय आउटपुट इज 1. Then what about 0 to 0 3 5 6? Automatically we can say output is equal to 0 na, because in the Boolean output can be either 0 or 1. So हमारा फंक्शन डिफाइन करने समय पे दो तरीका होता है. एक बाय यूजिंग द वंस इन द आउटपुट, अनदर इज बाय यूजिंग जीरोस इन द आउटपुट. अगर वंस यूज करके मैंने एक्सप्रेस किया तो इसको बोलते एसओपी. अगर जीरो यूज करके मैंने एक्सप्रेस किया तो इसको बोलते पीओएस. ठीक है. सो वंस यूज किया तो एसओपी होता है, जीरोस यूज किया तो वो पीओएस होता है. राइट. सो दैट इज सो आउटपुट में वन होता है ना, वो उसको मिन टर्म्स बोलते हैं. आउटपुट्स में जीरोस को हम मैक्स टर्म्स बोलेगा. सो एसओपी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वंस. ओके, एंड पीओएस इज बाय विद द हेल्प ऑफ this one. So the end operation is also called as conjunction, and OR operation is disjunction. Okay, so it is also called as disjunction of conjunction.
So few properties I want to give with respect to the min terms and max terms. अगर आपके पास n variables है तो 2 power n min terms होता है, 2 power n max terms. Min terms and max terms are हमेशा complementary to each other हो पाएगा. And if you have a min term I is always the dual of the max term. I'll explain this. For example, if you take M2, that is 0, 1, 0. What is the min term 0, 1, 0? A bar, B, C bar. So what is the max term? 2 to the power of n is how much? 3 variables minus 1 minus 2. What is max term? 5. 7 minus 2. Max term 5 means, so 5 का मतलब क्या? 1, 0, 1. That is A bar plus B plus C bar. Here 1 है तो bar लेना, 0 है तो no bar. So what is your M5 का dual? A bar B C bar. Dual में प्लस को डॉट हो पाएगा, डॉट को प्लस हो पाएगा. This is nothing but my min term. So that is given by the sum of all min terms हमेशा 1 हो पाएगा, sum of all zeros हमेशा 0 हो पाएगा. So कोई भी function self dual होना चाहिए तो your function must have a min term as I and max term as 2 power n minus 1 minus I. I'll show you that. I'll show you. For example, if you have A, B, C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay. So suppose here, if this is a min term x, this should be max term. So ये 0 है तो ये 1 होना, आउटपुट में ये 1 है तो 0 होना. Similarly, here आपको y आएंगे तो ये y bar होना. ये z है तो ये z bar. ये p है तो ये p bar. For example, if it is a min term, ये max term होना. Okay. 2 power 0 minus 2 power 3 minus 1 is 7 minus 0 is 7 ना. So ये min term है तो max term and vice versa. ये max term है तो ये min term. ये दोनों min terms है तो ये दोनों max terms. ऐसा हुआ तो these functions are called as self dual. ठीक है? That is the required condition for the self dual. So if you have here four variables, 4 zeros to 4 1, 16 possibilities आएगा ना. So 2 power 3 minus 1. So the next one we are going to discuss is the K-maps, Karnaugh map. So generally Boolean algebra और K-map ये सभी चीज क्यों यूज करेगा भाई? Boolean algebra, K-map सभी चीज इसलिए यूज करेगा सर हमने to minimize the given logic function. To minimize the given logic function. इसके पहले एक और चीज में देना चाहिए. So the next important point is a two-level logic. So two-level logic पे two-level logic. If you have NAND for अरे यार क्या हुआ अभी? If you have a NAND gate, इसका आउटपुट एक और NAND गेट पे मैंने कनेक्ट किया तो it is equivalent to AND gate followed by OR gate because you can write this NAND gate as bubbled OR gate. So bubbles cancel हो पाएगा. So final conclusion is NAND का आउटपुट में NAND है तो it is equivalent to AND OR, that is SOP. If you have similarly NOR का आउटपुट में NOR कनेक्ट किया तो NOR का आउटपुट में NOR कनेक्ट किया तो that will be working like a OR AND operation. OR AND operation. So POS.
Now, to minimize the function, how to take the help, how to minimize the function. So minimization के लिए हम boolean algebra use कर सकते हैं, k-maps भी use कर सकते हैं. Boolean algebra use किया तो दिक्कत ये होता है, it will what happens, it will take lot of time and confusion. So इसको avoid करने के लिए हम क्या करेंगे ना, we will be taking the help of k-maps. So k-map का rules ये होता है, हमेशा when you draw the K map, you should pair the maximum possible adjacent cells. Suppose if you pair 8 adjacent cells, so 2 power 3, it will eliminate, octet will eliminate 3 variables. Similarly, quad is a group of 4 cells, 2 power 2, it will eliminates 2 variables. So ये eliminate करेगा 1 variable. Okay. So that is pair of. So when you group more number of cells, your output expression by number of variables, वो term पे each term का variables कम हो पाएगा and it can say, minimize your expression. So K-map का rules तो ये होता है हर min term compulsory कम से कम एक बार तो cover करना and कोई भी redundant grouping है तो इसको निकालना. So now the K-maps. सो के मैप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है, एक सिंपल सी चीज ये होता है डोंट केयर कंडीशन. बुलियन में यू कैन नॉट डील विद डोंट केयर, बट के मैप में वी कैन डील विद द डोंट केयर कंडीशन. अगर डोंट केयर आएंगे तो डोंट केयर का मतलब क्या है सर? अगर मेरा सिस्टम पे देर इज सम अनवांटेड इनपुट अकर्स, ओके, और इफ देर इज सम इनपुट विच नेवर अकर्स एंड इसका आउटपुट कैन बी ट्रीटेड आइदर एज 0 or 1, डजंट अफेक्ट माय सिस्टम परफॉर्मेंस. सो देन डोंट केयर वाला मेरा एक्सप्रेशन मिनिमाइज करने समय पे 1 जैसा लेना, 0 जैसा लेना, whichever is more helpful for minimization, we will take like that. Similarly, there is an important concept called as implicant, prime implicant, essential prime implicant. So implicant is nothing but a minterm or a maxterm. So prime implicant ये होता है, the groups you are forming by joining the maximum adjacent cells को बोलते हैं prime implicant. So K-map draw करने समय पे you might be getting the what we call choice. You can select this pair, this pair. If you suppose, for example, मेरा पास एक के मैप है. Okay, this is just for understanding purpose. Here, how many groups are there? एक group, दो group, तीन groups. So तीन implicants होता है. इसमें these are the groups which are called as compulsory in your output expression. उनको बोलते essential prime implicates. Essential, ये इसको बोलते हैं prime implicant. इसको बोलते हैं essential prime implicant. Similarly, for example, this is one group, this is one group, ये भी एक group है, ये भी एक group है. How many groups are possible? Prime implicants तो 4 है भैया, but the group which contains at least one cell which is not touched by other are called as essential prime implicants. So कितना आएगा? 2. Essential prime implicants means they should be compulsory. Those groupings are compulsory present in your output expression. Even you write the solution by n different ways. डीएसी एडीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है गेट इलेक्ट्रिकल के भी. एटलीस्ट स्पेसिफिकेशंस तो पढ़ लो भाई आदित्य. ठीक है, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ना इससे. अब आपके लिए तीन ही चैप्टर है ना, तीन में एक चैप्टर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट मींस हाउ कैन आई से दैट इट इज डेफिनेटली. ये बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए एग्जाम पे इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा. सो सारे क्वेश्चंस सीक्वेंशियल से शुरू हो पाए, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल एंड डाटा कन्वर्टर्स, तीनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट लीव दैट. एंड डाटा कन्वर्टर्स लेंदी चैप्टर भी नहीं है यार, आप 8 घंटे टाइम स्पेंड किया तो हो पाएगा वो. चलो. सो if we have in a n variable k map, okay, we can have maximum 2 power n minus 1
prime implicants in the output. It's an important object to be given in the GATE 2014. So best example is exclusive OR gate ले लो. ठीक है चलो. So then now we are moving to the third chapter of our discussion, that is combinational circuits. So combinational circuits के अंदर what we are going to discuss here is इस topic में भी actually digital पे ज़्यादा formulas तो नहीं है but थोड़ा सा मैं concept भी touch करेगा such that आपको थोड़ा सा revision हो पाएगा. So digital में ज़्यादा से ज़्यादा formulas उस topic पे आएगा, that is your DAC ADC वाला topic में. बाकी पे बहुत ज़्यादा formulas तो नहीं है इस पे, to be frank to speak. So combinational circuits में expressions we should discuss, we can discuss. So the first thing combinational circuits में क्या करेगा ना, हम कंप्यूटर का arithmetic operations करने वाला basic blocks discuss करेगा, like half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, carry look adder, सभी चीज. Okay, so here half adder क्या होता है? In half adder you have two inputs. Half adder ऐसा होता है, आपको हाफ एडर पे दो इनपुट हो पाएगा, दो आउटपुट. अगर आपने ए एंड बी दिया तो आपका आउटपुट में सम एंड कैरी आएगा. सो सम इज इक्वल टू गिवन बाय ए एक्स और बी, कैरी इक्वल टू ए इंटू बी. सो इतना सिंपल है हाफ एडर. ओके, सो सिमिलरली फुल एडर क्या होता है? फुल एडर में क्या होता है? यू विल बी हैविंग थ्री इनपुट्स. फुल एडर पे आपको तीन इनपुट्स होता है. यू विल हैव ए बी एंड द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन, एंड यू हैव टू आउटपुट्स ए बी सी एंड द टू outputs. So this is your full adder. ठीक है? So it contains two outputs. What are your sum here is given by AX or BX or C, and carry is given by minimized way पे AB plus BC plus AC. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेरिवेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वाला सेशन है ना. जस्ट इसको हियर हमारा आपका ये मतलब ये है, you have already attended the classes and know the comprehensive part. Here I am not teaching anything new, केवल रिवीजन कर रहा हूँ मैंने. ठीक है? सो ए एक्स और बी इंटू सी प्लस ए बी ऐसा भी ले सकते हैं. सो दैट इज अबाउट योर फुल एडर. डिफरेंस क्या है फुल एडर एंड हाफ एडर में? हाफ एडर में वी कैन ऐड ओनली टू बिट्स एट ए टाइम, बट इन मल्टी बिट एडिशन पे क्या होता है? थर्ड बिट विल आल्सो कम इनटू पिक्चर ना. थर्ड बिट विल आल्सो कम इनटू पिक्चर, दैट इज द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन. इसलिए we should take three bits at a time for full adder. So the next one is half subtractor. So आपको इनपुट दो होता है आउटपुट में. You have difference and borrow. So the difference is equal to AX or B and the borrow equal to A bar B. So only this A is the difference between full adder and sorry, half adder and half subtractor. Lastly, full subtractor. Here we will consider the borrow also. Here three inputs. What is the third input? Previously, the carry generated from the addition in the previous stage. Here, borrow input. That is the borrow given to the lower stage. What is that? Here, A, B, and B naught. What is B naught? Okay, C or you can take B naught. It is borrow given to lower order. Okay, then you will get that is the borrow input. Okay. Then you get a difference and borrow. This is borrow to be taken
from higher order. So the difference is A XOR B XOR B naught. The borrow is A bar B plus, sorry, BI. A bar BI plus B into BI. BI or C, whatever you want, you can take. Okay. So the ripple carry adder ये होता है, इसमें we will be taking 4 adders like this. 4 नहीं, n bit है तो n adders we can take it and connect in the cascade. So इसमें output of one adder will be connected as input to the next. So you have S naught, S1, S2, S3. Okay, you have, listen, a few conditions I want to say. If you have a n bit ripple carry adder, इसको बोलते हैं parallel adder also, requires n full adders or n full adder plus one, sorry, n full adder नहीं है तो n minus 1 full adder and 1 half adder. ठीक है, n minus 1 full adder and 1 half adder be sufficient, and 1 full adder is equal to 2 half adder plus solid. Okay. So what is the conversion time? Here very important object to be here hota hai. Conversion time is n minus 1 times Tc plus maximum of Ts comma Tc. This is the only very important. Okay. Here n is number of bits. Okay. Tc is propagation delay of each full adder carry. Ts is propagation delay of each full adder sum. Here very exception ये होता है. Please understand. Blindly don't use this formula every time. Exception, time required for conversion or time propagation delay we also. So here when I can use this formula, when I cannot use this formula. जैसा डब्बा देके examiner TC TS दिया तो blindly apply करो भैया. But okay, exception ये होता है if inputs are specified or
internal circuit given, don't apply this formula. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो इंटरनल सर्क्यूट एग्जामिनर दिया तो अप्लाई मत करना, इंटरनल सर्क्यूट के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन और अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन दे हैव डन वी शुड सॉल्व इट. सो अगर एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं. सो इंटरनल सर्क्यूट दिया तो प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज उस केस में यू विल नॉट गेट दिस. फॉर एग्जांपल, because it depends on how it is implemented, then carry and ts you should calculate. And sometimes maybe suppose a 3 input XOR gate is made, best example is this one. So XOR gate is made in this fashion, then what happens is normally here the assumption is once this carry comes, next addition will start. But in this case, what happens? This will be this job. Half of this job is done without carry. Half of the job is depending on the carry. This is the exception where here A B and here C. Here this depend on carry. It is ये वाला part independent of कैरी. सो ये वाला केस में ऐसा इंटरनल सर्क्यूट दिया तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला. अगर इंटरनल सर्क्यूट नहीं दिया, केवल डब्बा दिया, टीएस दिया, टीसी दिया, ब्लाइंडली यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चंस दिया एग्जामिनर पिछले वाले पेपर्स में, बिना दिस फॉर्मूला आल्सो क्वेश्चंस गिवन. सो दैट्स व्हाई मैं आपको पूछ रहा हूं. सो प्लीज टेक अटेंशन सच दैट डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला ब्लाइंडली. ठीक है, चलो. So the carry locate adder is used to improve speed. हमारा स्पीड इंप्रूव करने के लिए ये कैरी लुकेट एडर यूज करेगा. सो कैरी लुकेट एडर का सर्क्यूट ऐसा होता है. यू हैव कैरी generator circuit which contains AND gate followed by OR gate. Here you have A B दिया तो generate carry, generate and propagate carry वाला conditions. Okay, here you get carry input. If you apply to sum, you get the XOR gate. So the total delay here is equal to 4 gate delays. Okay, what is the generate carry formula? A into B. What is the propagate carry formula? A XOR B. A or B भी ले सकते हैं. So what is the formula for sum? It is A XOR B XOR C. What is the formula for carry in the next stage is given by GI plus PI into CI. Okay. So PI पे sometimes A XOR B ले सकते नहीं है तो AI plus PI. Okay, but sum हमेशा you should take A XOR B XOR C. Sum के लिए don't take A plus B plus C, गलत होता है. Okay, sum ऐसा मत लेना. So sum PI XOR with CI leading, yes. So here, if you have a n-bit carry generator circuit requires n OR gates, n into n plus 1 by 2 AND gates are required. Okay. This is about your carry located. So the next important चीज ये होता है कंपैरेटर सर्क्यूट. कंपैरेटर सर्क्यूट ऐसा होता है
this is a b bar. This will tell you a greater than b condition. Here, a bar b, this will tell me a less than b condition. Okay. And if you take here one NOR gate, that is a x nor b, this will tell me a equal to b condition. So a less than b is given by a bar b. This one is a b bar. So this is a basic comparator circuit which can use the basic condition when a is greater than b, less than b, equal to b wala conditions for one bit comparator circuit. So the next important चीज ये होता है marks. So marks में एक्चुअली याद करने के लिए कम है बट कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा है मिक्स पे. सो मार्क्स में आपको बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं बट वन थिंग व्हेन एग्जामिनर गिव यू, बिकॉज यस्टरडे क्लास में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करने समय पे मार्क्स में क्या क्या करना, कुछ एवरी मॉडल का एक एक क्वेश्चन लेके मैंने एक्सप्लेन किया. प्लीज गो थ्रू दैट. नाउ हियर फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, what is the Mux characteristic equation? Characteristic equation of 2 by 1 Mux is S bar I naught plus S I1, and the number of 2 by 1 Mux required for AND gate, OR gate, NOT implementation equal to 1. NAND gate, NOR gate, XOR, XNOR implementation. How many gates are required? 2. So that is about your 2 Mux wala condition. And now if you have a 2 power n by 1 Mux, you want to have 2 power m by 1 Mux. So make 2 power n by 1 using 2 power m by 1. How to do it? Divide 2 power n with 2 power m. So let us take x plus x by whatever you get, divide with 2 power m, and so on until you end up with 1. Okay. So that is how we can convert one form of mux into another form of mux. We can use mux for implementation of logic functions. Mux with delays can come, but उसमें कोई formula नहीं है आपको explain करने के लिए. But mux is बहुत ही important है, questions आने के लिए बहुत chances है भाई. Okay. So decoder is equal to dmux. Here A, B enable. Here क्या होता है? S1, S0 input data in. Okay. Here decoder में suppose you see here, this is a binary decoder. Say n inputs, 2 to the power of n decoder. A, B, C, and so on. Okay, like this, you have the outputs. So here we can take, okay, this OR gate for SOP. If you take NOR gate, we can implement POS. For active low output, that is instead of direct output अगर bubble है तो उस केस में क्या करना? We take AND gate of max terms to implement POS, and NAND gate of min terms
Okay, bubbled or to implement SOP. सो मक्स यूज करके हम फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने सॉरी समय पे मक्स यूज करके कर सकते हैं, डीकोडर एनकोडर यूज करके भी कर सकते हैं. अगर डीकोडर यूज करके फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहे तो दिस इज द वे. सो डीकोडर का आउटपुट में सम ऑफ द मिन टर्म्स लेना चाहिए तो टेक ऐड ऑल द मिन टर्म्स टू OR गेट. If you want to take max terms, you can take what is that bubbled AND gate, or you can say it is nothing but NOR gate. So that finishes the combinational circuits wala chapter. So abhi आगे चलेगा sequential circuits पे. So let's move for the next chapter, that is sequential circuits. Here first very basic flip flop lags सभी चीज पता होना चाहिए. So let me give you a quick revision of all the flip flop conversions, excitation tables, truth tables at a stretch. Okay, so let's start. Just one moment, पानी लेता हूँ. Okay, so listen here. सो ये बेसिक है बहुत, बट आई होप यू नो इट. सो मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एज्यूम कर रहा हूँ. सो जीरो जीरो में नो चेंज हो पाएगा, जीरो वन एंड इट इज इनवैलिड. नेक्स्ट क्या? दिस इज माय क्लॉक. नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज जेके. क्लॉक इज जीरो, कोई नो चेंज कंडीशन. ओके, similarly for D flip flop and T flip flop. Okay, here
Here, whenever you do one toggle, here the characteristic equation is T XOR with Qn. Here, what is the characteristic equation is D. Transparent latch भी बोलते हैं J Qn bar plus K bar Qn. Here, what is the characteristic equation is S plus R bar Qn. Here, if the pulse width, if the propagation delay is less than the pulse width, then आपको रेस कंडीशन आएगा. So the time TPD हमेशा TPW से ज्यादा होना, less than the time period of the clock होना, then no race condition. Race condition क्या है? मेरा output is toggling more than once in a single clock pulse is called as the race condition. So this is the basic flip-flop का all truth table. Next important, using truth table हम characteristic table बना सकते. So the next important one is excitation table of the all flip-flops. So here excitation table will give you what are the inputs you should give to get a particular output. To get a particular output, what are the inputs to be applied? So Qn plus 1. Okay. What are the inputs to be applied is given by 0 cross. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेशन सभी चीज तो नहीं कर रहा हूँ, क्यों? ओके, 1 0 0 1 क्रॉस 0. सो इसको याद करने के लिए भी एक शॉर्टकट है, हमेशा ऊपर से नीचे पढ़ लो, नीचे से ऊपर पढ़ लो, सेम ही आना चाहिए. नेक्स्ट, पर जे के it is 0 cross 1 cross cross 0. एक मिनट. Okay, so here also same rule, you read from ऊपर to नीचे, नीचे to ऊपर से. So for the D flip flop, Qn plus 1 equal to D. पर T flip flop दोनों सेम है तो 0 देना, दोनों अलग अलग है तो 1 देना. So that is about all excitation tables at one stance. So let's see how to convert one flip-flop into another flip-flop. Let me give you all conversions. So how to convert one flip-flop to another flip-flop is, I can say, to convert one flip-flop to another. My shortcut is equate both characteristic equations by taking available flip-flop on left or characteristic table of desired followed by excitation table of available. Okay, so
दिस इज नॉट फॉर यस और बाकी केस में अप्लीकेबल। ठीक है, नाउ लिसन हियर, लेट मी राइट ऑल कन्वर्शंस एट वन स्टैंड। एक स्टैंड में एक जगह पे सभी कन्वर्शंस लिखे गए हैं। So here you take the flip flop. It can be SR, JK, D, T. Now you are writing SR to any. How to convert SR into SR? कोई requirement नहीं. SR to JK के लिए क्या करना? S equal to JQN bar, R equal to KQN करना. ठीक है? S equal to JQN bar, R equal to KQN करना. Here, how to convert SR to D is S equal to D, R equal to D bar. Here S equal to TQN and R equal to TQN. Right. Here मेरे पास JK है तो how to convert JK to any? JK to SR is same. Take JK as it is. Use J equal to S and K equal to R. Invalid condition तो use नहीं करना. So J equal to D, K equal to D bar, J equal to K equal to D. So if you have a D flip flop, D to any. So D equal to characteristic equation of your required flip flop. D equal to D को D से कन्वर्ट करना नहीं चाहिए ना. D equal to T XOR QN. Yeah. आपके पास T flip flop, how to convert into any other flip flop? Make T equal to S QN bar plus R QN. T equal to J QN bar plus K QN. Okay, T equal to D XOR QN. So that is about your conversions. How to convert one flip flop into any other flip flop. All flip flop conversions at a single place I have provided you. Okay, chalo. So the next one is registers. हमारा पास different type of registers है. SISO, SIPO, PI, SO, PI, PO. Okay, SISO में to apply the input you require 1 minute. इनपुट अप्लाई करने के लिए, आउटपुट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस. सो इनपुट अप्लाई करने के लिए n क्लॉक पल्स, आउटपुट के लिए n-1 क्लॉक पल्स चाहिए. एप्लीकेशन इज टू डिले द इनपुट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट इज यूज्ड. हमारे नंबर को लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट शिफ्ट इज यूज्ड फॉर 2x. ओके, राइट शिफ्ट इज यूज्ड फॉर डिवीजन बाय 2. ठीक है. सो
The serial input, parallel output. Here, n clock pulses are applied for input, 0 clock pulses for output. It is a serial to parallel or temporal to spatial conversion. So the next one is parallel input. Input देने के लिए एक clock pulse, output के लिए के n minus one clock pulse. Here it is a reverse, ulta, parallel to serial conversion or spatial to temporal. Here input के लिए एक clock pulse, 0 clock pulse. So this is a storage register, no, not shift register. So there is one more called universal shift register, can shift left, shift right. Okay, it can do parallel load and clock inhibit. Okay, means save or do nothing. So there is one register which can do both the left and right shift, that is called as a universal register. So this is very basic about the registers. Now registers में देखो, if you take a register and its output is connected back to the input like this. This is what we call ring counter. Ring counter mein output of the last flip-flop is connected back to the input of the first flip-flop. Here few rules, f not equal to f clock by n. Exceptions तो कल सुबह वाला क्लास में भी मैंने डिस्कस किया ना. So here it will generate signals. It generate signals of same frequency with relative phase shift of 360 degrees by n. Okay, and it has n used states 2 power n minus n unused states. Because आपके पास n bits है तो 2 power n combinations बन सकते हैं. इसमें n used किया, बाकी 2 power n minus 1 is unused. And output duty cycle is equal to 100 by n. So similarly, instead of ring counter, if we use Johnson counter, in Johnson counter क्या होता है? We will connect instead of Q bar as the feedback. Here आपको 2n states आएगा, 2n used and 2 power n minus 2n unused. And आपका f naught will be f clock by 2n. It will generate unit distance code generator also. That is another name for your Johnson counter का output will be having one state and another state के बीच में केवल एक ही bit change हो पाएगा, बाकी चीज तो same रहेगा. ठीक है? And देखो 1 minute. Here duty cycle will be 50%.
For example, here 100, 110, 111, 011, 001, 000, 100. ऐसा it will generate it. F naught equal to F clock by 2n. What is the relative phase shift between successive? 360 degrees by 2n. So the next one is we are discussing about there are two type of counters available, synchronous and asynchronous. Asynchronous counters we are going to discuss now. Before that, if you have mod n number of flip-flops for mod n is equal to log to the base 2 n or log to the base 2 maximum count plus 1. So for next count for flip for f not equal to f clock by n. And if you have mod m cascaded with mod n, you will get mod mn. Now, if you connect the all flip-flops in the toggle mode and cascaded the output of one flip-flop to another flip-flop with the help of clock, then it will work as a counter. इसमें अगर मैंने clock input is Q of the previous flip-flop, then and the negative edge triggered, it is a down counter. Sorry, positive edge trigger, it is a down counter. If clock input is a Q of the previous flip-flop and negative edge trigger, up counter. Like that, we have four combinations possible. So here, याद करने के लिए Q and sorry, negative edge and Q bar and positive edge and Q, we can say same. Okay, negative edge triggered flip-flop, Q bar is the clock. So negative Q bar are positive Q. So same height down. To remember easily, opposite up, then you can remember easy. Same is nothing same here, just to remember that negative Q bar, positive Q. ऐसा positive triggered में Q is the clock input, then it is a up count, down counter like that. So sometimes examiner morning भी हमने question किया. Sometimes examiner will give you a counter. He will ask you identify the mod of the counter. How do you find the mod of the counter? Is first you should identify wherever the clock is applied that will become the LSB. Then क्या करना है इसके बाद you should once identify up or down counter using the previous logic, identify the LSB, then you should identify the feedback gate. For example, if you want to count mod 5, it will count 0 to 4. 5 आएंगे तो it should give clear. Suppose it is A, B, C. Then A, B bar, C is the gate. Okay. Or that is A, B bar, C. I should give to clear. Or I can also do just AC also, because in the first 5 only 1 happens here. I can give it to a NAND gate. Or I can use A bar, C bar to be a OR gate. All are correct. Okay. Here clear bar. Okay. Or you can see here. So clear can be active high or active low. Active high है तो AND ले लो. Active low है तो clear bar ले लो. So here asynchronous counters में few more points I want to discuss here is the time required for conversion is approximately equal to n times TPD. N times TPD. Okay. N is number of flip-flop. TPD, propagation delay of each flip-flop. Okay. So my time period of the clock should be greater than n TPD and the frequency of the clock should be less than or equal to 1 by n TPD. पर सिंक्रोनस क्या होता है ना, सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक एक ही बार दे सकते हैं हमने,
So T conversion is equal to generally T setup plus TPD of the flip-flop plus T of gate input circuit. Okay, so time period of the clock should be greater than T setup plus TPD plus T of the gate. If setup not given, time period of the clock should be greater than here my frequency of the clock should be less than or equal to 1 by T setup plus TPD plus TG. Okay, then setup nahi diya to it will be simply TPD plus TG. Or if TG 0 hai to time period of the clock should be greater than TPD and frequency of the clock should be less than 1 by TPD. So synchronous and asynchronous. So the next last part of your this one is FSM, finite state machines. There are two ways we can design the finite state machines, Mealy machine and Moore machine. In the Mealy design, what happens is your input, your next state depends on the present state and input. In the Moore, next state depends only purely on the present state, not on the input. Input cannot directly affect the output. So because of that, what happens is in the Moore state diagram, it is more immune to noise and output is synchronous with the state. Your output here, output is depending on the input and output is can be more can be easily disturbed with the help of input. Input में noise हुआ तो भी मेरा output affect हो पाएगा. Okay, so इसमें more states हो पाएगा but less complex here, less number of states but little complex. Okay, so the next chapter we are going to discuss is data converters. So how to convert analog data into its equivalent digital format or a digital data into its equivalent analog format we are going to discuss in this chapter. So in the data converters, one thing we should remember is the specifications of the logic data converters. So very important. Resolution, it is equal to step size is V reference by 2 to the power of n minus. V reference by originally it is a number of steps. It is equal to V reference by 2 to the power of n minus 1. Okay, where n is the number of bits. Okay, for winding. Okay, and the next one is a percentage resolution. Resolution R ले लो. So percentage resolution is equal to 1 by 2 to the power of n minus 1 into 100%. And the next one is full scale or analog output. Analog output is given by resolution into decimal equivalent of input. And the last one, full scale output is given by V reference. Okay, maximum output. Okay, so these are some basic specifications of your DAC. For ADC also, your resolution will be V range by 2 to the power of n minus 1. Okay, percentage resolution.
Okay. Signal to noise ratio is given by 1.76 plus 6n. Okay. So from this, we can also find effective number of bits. So here in DAC and ADC, one thing we should remember, DAC में weighted raster type DAC होता है, and ADC में conversion times are important. So let me make it time. So the specific ADC, let's take with the counter type. Okay. Flash type and SAR type and dual slope. इसमें what is the T conversion in number of clock pulses I'm speaking? Here it is a 2 power n. 2 power n minus 1, or you can take 2 power n. Here flash type is 0 ideally, or 1. Here you can take n or n plus 2. Okay. Here n is the number of bits here. Next, dual slope made 2 to the power of n plus 1 minus 1, or to the power of n plus 1 approximately. So this is the slowest and most accurate. This is the fastest. And this is having uniform conversion time. What is the meaning of uniform conversion time? Conversion time is independent of magnitude of the input. And in the dual slope integration type, one more important formula is Vn into time required for deintegration is equal to Vn into Ti by. Okay, so those are the things we should remember from the conversions of the DAC and ADC. So last chapter इलेक्ट्रिकल बच्चों है तो आप लोग जा सकते हैं, ईसी वाला बच्चों के लिए ये टॉपिक, इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए नहीं चाहिए ये. सो सीमॉस में क्या होता है ना, फर्स्ट थिंग वी शुड नो, फास्ट ट्रांजिस्टर का actually you study this in analog anyway, but okay, PMOS strong in one, NMOS strong in zero. Okay, PMOS on when VGS is negative. Okay, NMOS, okay, more negative than VT. NMOS कब ऑन होता है? When VGS is positive, that you can say more positive than VT. When VGS equal to 0, both are on. So here, अगर ऐसा सिंबल दिया तो एग्जामिनर, इनपुट इक्वल टू 1, NMOS will be on. अगर ऐसा दिया तो इस केस में इनपुट इक्वल टू 0, PMOS will be on. Okay. Here, generally its propagation delay is approximately बोल रहा हूँ, some 70 nanoseconds. Power dissipation very low होता है. Figure of merit is multiplication of these two, 0.7 picojoules होता है. Noise margin is approximately 35% of your drain voltage.
fan out will be approximately 50. All of them are very good except speed. Baki sabhi the best in your what we call CMOS logic family. So in this NMOS series is NAND, parallel NOR. For PMOS, for positive logic pull out. Okay, series is NOR operation, parallel NAND operation. Okay. So the one more topic is the semiconductor memories. These are the basic differences between SRAM and DRAM. SRAM data will be stored in the form of flip-flop. DRAM data will be stored by charging or discharging the capacitor. Here, you require more memory. It requires, I mean, more number of cells, and it is costlier. Here, less number of cells and relatively cheaper. And here, capacitor is there, so charging, discharging पे leakage हो सकते, periodically refresh करना पड़ेगा in the DRAM, but SRAM पे वो तो नहीं चाहिए. So SRAM costlier, relatively faster also compared to DRAM. So one more thing, इसको बोलते हैं sample and hold circuits. One important formula is there, loop rate. Okay, that is dVc by dt. That is when the circuit is holding the data, उस समय पे leakage नहीं होना. Okay, अगर हो गया तो it should not leak beyond half LSB in the conversion time. Beyond half LSB in the during the conversion time, it should not discharge more than half LSB. That is what we call the required condition. So the dVc by dt कितना होना चाहिए maximum? It should be less than half LSB. So 1 LSB is V reference by 2 power n. So you can take here V reference by 2 power n plus 1 into T conversion. This will also indirectly tell me the conversion time also. So, and one more thing here. So sampling time, because I will sample the input na, sampling time हमेशा greater than conversion time होना. Frequency of the sampling should be हमेशा greater than 2 times FM. Okay. Okay. That is a required condition. So that is about your logic families and all those things. So that finishes our discussion of total digital circuits. I hope you enjoyed the class. ठीक है. So फिर मिलेगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सो सही से प्रिपेयर करो यार. इस 20 दिन जो टाइम है ना, सही से यूटिलाइज करो. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिविएट फॉर अननेसेसरी थिंग्स. सो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी स्ट्रैटेजी सेशंस एक्सेट्रा पे भी अभी तो टाइम वेस्ट मत करना. पूरा फोकस आपको प्रिपरेशन पे रखना चाहिए. सो अटेंड द सेशंस विच आर इंपॉर्टेंट, विच कैन हेल्प यू, विच कैन सेव योर टाइम. जैसा आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने के ज्यादा टाइम लग रहा है, ये क्लास देखेंगे तो कम टाइम पे आपका काम हो पाएगा. यू कैन अटेंड इट. नहीं है तो you can take a decision but prepare well. These few days are very 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 important. Never give up. ये 20 दिन आपका हेल्थ भी important है, आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं होना. because if you are very cool you can perform very well in your examination. So please don't deviate for unnecessary things. Everything anything can you can think after 20 days. अभी तो सोचना मत रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या. सभी चीज छोड़ दो. किसी भी समय पे आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप फील फ्री करो. यू कैन बी इन टच विथ मी. ठीक है. नहीं है तो हमारा एग्जाम दोस्त का व्हाट्सएप नंबर में भी आपका कोई भी क्वेरी है तो आप लोग डाल सकते हैं. हम मैं कामेश सर, अंकित सर, साकेत सर, नीरज सर, सभी से एक आपको रिप्लाई भी मिलेगा आपको. ठीक है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच गाइस. सी यू ऑल. बाय बाय. ऑल द बेस्ट.